Massive protest erupted today in Odisha over Nayagarh minor girl Pari murder case. Political parties turned the heat on Minister Arun Sahu demanding his resignation. With massive outrage both inside and outside the Odisha Assembly, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik ordered a special investigation team SIT probe into the matter. State BJP took to the streets in Bhubaneswar today demanding justice for Pari. The protesting BJP workers who were heading towards the Odisha Assembly were stopped by the police in front of the assembly, resulting into a violent scuffle. On the other hand, police also picked up 10 to 15 protesters who were taking out a motorcycle rally towards the Odisha Assembly. These protesters were reportedly from the BJP and were on their way to Gherao the assembly demanding justice for Pari. क्राइम ब्रांच उपरे आमे आदौ संतुष्ट नुह 4 मास तले गोटे हत्या होइছে निष्पाप शिशुर सरकार पूरा निशारे अछंती 4 मास हलानी सरकार सोइचंती 4 मास परे निद भांगुचे जेते बेले तार बापा मा निज ऊपर पेट्रोल ढारुचंती आमे प्रथमे जो बापा मा मंत्री को ना नैचंती से सर्वप्रथम नैतिकता दृष्टि इस्तीफा दियंतु अरुण साहू आज इस्तीफा दियंतु एवं जे आसामी अछि तांकर सहयोगी ताको अति शीघ्र ताको गिरफ्त करा जाऊ. On the other hand, Youth Congress also carried out a rally demanding justice for Pari and Minister Arun Sahu's resignation. While the Youth Congress members who were taking out a rally from the Master Canteen Square towards the assembly were stopped by police, leading to clashes. To control the situation, police took several Youth Congress workers into custody. State Youth Congress President Smruti Ranjan Lenka said that they will continue to protest to ensure justice for Pari. देखु राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण भाव विपर्यस्त होती परी छोट झीटी को जो भाव हत्या अति नृशंस भाव हत्या आम दाबी करूँ समस्त दाबी थिला जे सरकार ताकू न्याय देवे पुलिस प्रशासन ताकू न्याय देवे किंतु बड़ दुर्भाग्यर विषय एत दाबी पर ये घटनार जी संपृक्त संविधानिक पदर रही से पर्यंत इस्तीफा देना ताले तदंत क्या सपक्ष हम तदंत निरपेक्ष तदंत हो पार बोली केवे आम विश्वास करूँ तेणु निश्चित भाव में आपड़ देखु कि भाव मंत्री निश्चित भाव प्रेसर पकाउथिबे पुलिस प्रशासन उपर प्रेसर पड़ुची तेणु आम दाबी करूँ प्रथम सरकार नवीन सरकार मुख्यमंत्री गृहमंत्री इस्तीफा दाबी करूँ आम मंत्री अरुण साहू को इस्तीफा दाबी करूँ तुरंत बहिष्कार करा जाऊ मंत्रिमंडल. On the other hand, the Sarpanch of Pari's village, Lakshmi Prasad Pradhan, alleged that the police is trying to divert the case into a different direction. परी घटना को लेकिन मु तो संपूर्ण भाव में मर्माहत कहीं परी घटना एजाबत मो पंचायतर से गोटे छोटिया पिलाटीए छोटिया झीटे जो परी परी रथ बुली आउ जो भी नयागढ़ स्पेशल प्रोजेक्ट चलता जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज छोट पिलाटे परीर बापा होती ऑटो चालक जो छोटिया माने ता बापार छोट पिलाटे गोटे मात्र झील जहाँ मारिकी ता बारीपटे पकाई दिगला आउ एटा को यही भाव में करागला जोटा कि पारिवारिक कलह को भिड़वाई से केसटा को करागला. परवर्ती मत प्रथम आज पर्यंत केसटारे मु संपूर्ण भाव में माने लक्ष्य करुच्ची किंतु पुलिस संपूर्ण भाव में यहाँ दिगहरा करुच्ची. Not only outside, outrage over Pari murder case was felt inside the Odisha Assembly as well. Members of BJP and Congress protested inside the Odisha Assembly, carrying posters and banners demanding resignation of Minister Arun Sahu. Bureau Report, OTV.